लैपटॉप में भी आ जाए। Yeah, so now it's recording. It's recording. Recording has started. I think I have like some in my laptop as well, some network issue maybe. So Poonam ma'am will be there, है ना ma'am? Yeah, she's also connecting. In the meanwhile, if you can bring the chapter on the screen. Yes, ma'am. Okay, which is day 26, magically transform mistakes into blessings. So this particular chapter, ये chapter number 26 पे इसलिए आया है because इसमें हम forgiveness सीखेंगे, क्योंकि ये जो दोनों chapters हैं, आज वाला and tomorrow's chapter, the mirror and mistakes वाला, this is because so many of us live in a guilt of doing something, guilt of not giving time to the children, गिल्ट की हमने किसी के लिए कुछ बुरा किया कभी में भी, शायद वो उस गिल्ट में रहते हैं, गिल्ट की हमने अपना किसी चीज को 100% नहीं दिया, ऐसी गिल्ट होती है कभी कभी कि मे बी हमने अपने पेरेंट्स की या किसी की सेवा नहीं करी एंड दे पास्ड अवे, यू नो। सो बहुत तरह के हम सबके लाइफ में बैगेजेस होते हैं, अलग अलग तरह के गिल्ट होते हैं जिसके साथ हम रहते हैं, एंड दैट गिल्ट विल नेवर अलाउ अस टू लिव अ फ्री एंड अ फुल लाइफ। सो आज का चैप्टर उसी बारे में है कि टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। कौन है जो गलतियां नहीं करता? यूनिवर्स के कहने का तरीका ही ऐसे होता है। Whenever the universe gives us some issues, it means it is trying to communicate with us, because it cannot appear in the human form and tell us कि ये गलत है, ये रास्ता मत लो, इसकी जगह ये रास्ता लो, तुम्हें यू टर्न लेने की जरूरत है। मतलब यू टर्न, जिंदगी में यू टर्न लेने की जरूरत है किसी पर्टिकुलर डिसीजन में। Suppose we have started a business, okay, and universe can see our destination, right? The infinite intelligence knows all and it is all that it knows. So it will not let us go on that path if it is not worthwhile. ठीक है, तो वो हमको that business will not run, and something else, someone else will propose and that will start working well, which means the universe was indicating to us that this particular thing that you're doing is not right for you, and there is something else which is way more bigger and that would serve you better, and that is what is your purpose in life. ठीक है, तो हमको वो वाला जो अपना दूसरा पाथ है उस पे जाने के लिए हमको यू टर्न तो लेना पड़ेगा ना। सो यूनिवर्स इस तरह से, तो इसीलिए इट इज ऑल राइट अगर कोई मन में ऐसी चीज हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, मैं गलती कर रही हूँ, मुझे बिजनेस चलाना नहीं आता, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, ये सारी चीजें, ये गिल्ट पैंग्स, हम में से बहुत जने गिल्ट पैंग्स में रहते हैं। ठीक है, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ होता है, मे बी हमने अपने आप को ही कुछ किया होता है, ठीक है, उसका गिल्ट होता है, कभी हमने किसी और को किया होता है, उसका गिल्ट होता है, ठीक है, कभी छोटी सी कोई चोरी की हुई होती है, उसका गिल्ट होता है, ठीक है। बट ठीक है, मिस्टेक्स एवरीबडी डज, ह्यूमन बीइंग्स का यही तो है। पॉलिश और क्या होता है? पॉलिश करने का तरीका यही होता है ना, दैट यू डू योर मिस्टेक एंड देन यू लर्न फ्रॉम देम। till the time you don't learn from them, you will keep doing the mistake again and again and again, है ना? So इसलिए आज का चैप्टर इसीलिए है that अपने आप को forgiveness मतलब we have to learn to forgive ourselves, चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी मिस्टेक है, और हम बिल्कुल भी अब से गिल्ट में नहीं जिएंगे। आज वाले चैप्टर पे स्टेप करके हम कल वाले चैप्टर में जाएंगे, विच इज द मिरर वर्क। ओके, वो भी वैसा ही है कि अपने आप से फॉल मैडली इन लव विथ योरसेल्फ, and that is the way to move forward in life, is with a lot of, you know, like a praise and worth for yourself, to yourself. ओके, फिर आप देखना कि आगे जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। सो आज का चैप्टर यही है। रमन, आप पढ़ो हमारे लिए। मैम 1 मिनट प्लीज, प्रिया प्लीज मेक मी द को होस्ट, बिकॉज मैंने लैपटॉप से वो करा है ना, तो मैं को होस्ट हट गई हूँ। And thank you everyone for posting the family pictures yesterday as we had decided. Once in a while, कभी 1 महीने 2 महीने में हम ऐसे ऐसे मजाक करते रहेंगे, but it was so beautiful to see everyone, है ना, to enjoy quality time with their families. That was all it was all about. So beautiful. Thank you so much for all those who posted. हाँ जी, please start reading, Raman. Yeah, अच्छा, पिक्चर में हाँ, 1 second, पिक्चर में बहुत डार्क क्लाउड्स, मतलब
बिल्कुल ही वो अंधेरी रात जो होती है with lots of dark clouds and thunderstorm and lightning and all of that, उसके बीच में एक ग्रेटिट्यूड की शावर आ रही है. इसका मतलब है कि कितना भी अंधेरा हो आपकी जिंदगी में, ठीक है, ऑलवेज लुक फॉर रीजंस टू बी ग्रेटफुल. दैट इज व्हाट इट मीन्स. ओके, सो गलतियों में भी मतलब आप अच्छी चीजें ढूंढो, ताकि गिल्ट का तो जी भी ऑप्शन नहीं रह जाए. सो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. हाँ जी, Yeah. प्लीज स्टार्ट Day रीडिंग. 26 magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. It's a quote by Oprah Winfrey. She is a media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we would never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake. But we didn't learn from it, and so bingo, we'll attract making the same mistake again. You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes, and blessings attract more blessings. Which one would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe
You lost your temper with a person close to you, and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. बैग Once you खाने have का बैग बोलो once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. मैंने To अपना help, to help you, there are two questions you can ask yourself. The first question is, what did I learn from the मैंने देखा mistake? यही पर आके नहीं रहता है इसी में रख देती हूँ Can we Ma'am, please Raman mute got muted. ourselves? Ma'am, Raman got Bela, muted. I think it's, yeah, thank you. But Bela, please control your device. The most important thing to be grateful for about every mistakes are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 हो गया blessings हो to be गया grateful for. वही Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. है Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number one, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, रोटी है after all, that was all they were इसको trying बंद to ही do. रखिए ठीक है सर नहीं इसी में रख ले Point, नीता वी आर ट्राइंग टू म्यूट यू अगेन एंड अगेन नीता प्लीज सी हम वही आपको बार बार नेहा म्यूट कर रहे हैं पर नेहा आप वशिष्ठ इट म्यूट हो इज जाते हैं बता दो इट इज नेहा बैग में वशिष्ठ रखिए पवन ये तुम्हारे हैं पराठे इसमें नेहा वशिष्ठ प्लीज अपना वो कंट्रोल कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए और डिवाइस अपने से दूर रख लीजिए ताकि बार बार हाथ नहीं जाए. हाँ जी रमन. point number two, I'm grateful to the police because if ये I'm honest with देती हूँ रुको रुको myself, मेरे पास है I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Point number three, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Point number four, I'm grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Point number five, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Point number six, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Point number seven, I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Point number eight, I'm grateful to the police
They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Point number 9, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. Point number 10, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in शूज your वगैरह रख लिए इसके साथ time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, choose one mistake you made in your life. Point number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Point number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Raman. Thank you for reading so beautifully. And a very important chapter indeed, which talks about, like, when Raman was reading this chapter, I was just thinking about that. I know what I have to do today because हमारे एक बहुत क्लोज अंकल थे, यहीं पास में ही रहते थे, अजय अंकल, ही पास्ड अवे. और वो जब हॉस्पिटल में थे तो पूरे टाइम लाइक वो बोल रहे थे कि आई ड्रेम्ट ऑफ दीप्ति, लाइक अपने बेटे को बोल रहे थे आई ड्रेम्ट ऑफ दीप्ति. एंड उसके बाद कहते थे कि वो आई नहीं अभी तक, या दीप्ति नहीं आई मुझसे मिलने के लिए. तो अंकल को बार बार ऐसा लग रहा था दैट ही इज गोइंग टू पास अवे एंड ही वांटेड टू सी मी, क्योंकि मुझसे वो वैसे भी बहुत कनेक्टेड थे. बट मैं पूरे टाइम ट्रैवल कर रही थी. मैं एक वीकेंड दिल्ली में थी, बट आई डिड नॉट गो टू मीट हिम इन द हॉस्पिटल बिकॉज मुझे बहुत कोल्ड हो रहा था. और मुझे लग रहा था अगर मैं उस कोल्ड के साथ आईसीयू, सो माय रीजन वाज दिस, कि मैं उस कोल्ड के साथ अगर उस आईसीयू में जाती, वहां पे बहुत सारे हेल्थ वल्नरेबल पेशेंट्स होते हैं. They could have caught my cold too, infection, and they were already battling with so many multiple problems. So I did not go, and well, uncle came home, and when he came home also, it was day 3 when I was available in Delhi. And ye abhi ki baat hai, last to last month. And then then I went to meet him, and uncle kept telling me that for almost 20 days I was there in the hospital and you did not come. So मैंने उनको बताया कि मैं एक्चुअली ऑन एंड ऑफ ट्रैवल कर रही थी एंड माय हेल्थ वाज लाइक दिस और व्हाटएवर, बट आई शुड नॉट हैव गिवन हिम दैट रीजन, बिकॉज जिस दिन बात की उसके नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे. मतलब उसी दिन उसी रात को मैं आज मिलने गई, उन्होंने मुझसे बात की, एंड वो इतने कनेक्टेड थे मुझसे, मोर देन हिज ओन चिल्ड्रन, दैट उन्होंने मुझे बोला दैट आई डोंट वांट टू बी बाउंड ऑन द दिस थिंग दीप्ति, ओनली यू कैन डू दिस, दैट गेट मी अ सेल्फ ऑपरेटेड व्हीलचेयर because I want to kind of be mobile and I want to see the world. He told me this, that I want to see the world. And so मुझे इतना, मतलब वो बहुत time मेरे मन में guilt था that this is a mistake I had done. I could have worn 2 or 3 masks and
gone to the hospital, you know, like वो तो उससे मैंने ये सीखा, वो magically turning mistakes into blessings. So गलती की. So what did you learn from that mistake? That when someone needs you, you have to be there with lightning speed. Okay, पहली चीज मैंने ये सीखी, you have to be there with lightning speed and prioritize that, because life is so uncertain and human relations are very, very valuable. And the thing that forever now I will be doing, that whenever I feel that anyone needs me or they say that I need Deepti, I will be there for their aid, you know, like, so this is what I learned and this is what we need to kind of continue doing. So therefore, मुझे पता है कि मुझे मेरे मन में ये वाली चीज है और मैं डेफिनेटली इसके बारे में 10 blessings लिखूंगी. तो इस तरह से this is what this practice is all about, that हमने हो सकता है कोई ऐसी गलती करी हो और हर मिस्टेक में अनटोल्ड नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स होती है. तो हमको क्या होता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, हम या तो एक्सक्यूजेस देते हैं और वी स्टार्ट ब्लेमिंग समवन एल्स, है ना. जब भी कोई भी गलती होती है, सपोज ऑफिस में कुछ ब्रेकडाउन हुआ, कुछ इशू हुआ, व्हाटएवर, डिसिप्लिनरी इशू हुआ, एंड आपने जाके बॉस से अपने कोलीग की शिकायत कर दी जाके, you know, that मैं तो कभी ऐसे नहीं करती थी, उसने ये किया and I had to be party to it, और वो ऐसे करती है and वो वैसे करती है. सपोज आपने वो किया, ठीक है, अब उसकी वजह से शो कॉज नोटिस या डांट आपके कोलीग को पड़ी, कंप्लेन आपने की थी, ठीक है, और इतना मतलब उसके साथ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बुरा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट कंप्लेन दैट यू मेड टू द बॉस अबाउट योर कोलीग. Okay, and now you can see the other colleague suffering और आप guilt में जाते जा रहे हो कि मैंने कर दिया, है ना. कई बार ऐसे लगता है ना, why did I do it? I shouldn't have done it. There was a better way of handling it. I should have been more matured in dealing with it. मुझको सोच समझ के ये करना चाहिए था. मैंने ऐसा क्यों कर दिया? You know, इसकी वजह से इतना सफर कर रही है. अब ये घर पे भी जा रही होगी, ये बच्चे भी हैं इसके, बहुत ज्यादा मतलब घर में भी ये खुश नहीं रहती होगी. तो ऐसे में अब आप सीखो कि आपका बिहेवियर, दैट मीन्स अगर वो मिस्टेक हुई है आपसे, तो पहले तो उस पर्सन के लिए भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना है फॉर एनीथिंग दैट पर्सन, इवन इफ यू हैव स्पेंड दैट you know 5 quality minutes with that person, we have to be listing it. आज की लिखने की प्रैक्टिस है, ठीक है, एंड आप ये भी लिखो कि आपने क्या सीखा, कि कभी भी किसी के बारे में ब्लेम नहीं करना चाहिए. जो भी आपके आउटवर्ड रियलिटी में पहली चीज हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर इनर वर्ल्ड. अगर मेरा लैपटॉप आज नहीं चल रहा है तो मैं मेडिटेशन में आई एम गोइंग टू आस्क माय सेल्फ दैट व्हाट इज इट, व्हाई दिस डिडंट वर्क, राइट. आई मीन लाइक आई एम श्योर दैट मुझसे कुछ ऐसा होगा, बिकॉज कोई भी आउटवर्ड रियलिटी आपकी होती है ना, वो हमेशा अंदर अंदर का, योर इनर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्टेड इन द आउटर वर्ल्ड. Whether it is my laptop not working today, whether it is overspilling of the milk on the gas, whether it is some medical issue that I may have, maybe सिर दर्द किसी का हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, जो भी outward reality है, that is the reflection of your inner world. First thing that we need to understand, which means we have the power to control the outer reality. If I am the cause, I am also the solution to it, no? So this is what we are doing today. Today we are being solution oriented. Mistakes करना तो mandatory है, नहीं तो पॉलिश कैसे होंगे, कैरेक्टर पॉलिश कैसे होगा, सीखेंगे कैसे, है ना. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी जॉब्स बार बार छूटती हैं. They land up in job number 1, something goes wrong, okay, after 8 months they land up in job number 2. Again in job number 2 something goes wrong, they land up at job number 3. ठीक है, फिर वहां पे 1.5 साल में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर से वो दूसरा जॉब ढूंढते हैं. तो उनका कॉन्स्टेंटली कुछ ब्रेकडाउन, इसीलिए कहते हैं ना, आप जॉब छोड़ो मत जब तक आप अपने आप को इंडिस्पेंसिबल नहीं कर लो अपनी इस जॉब में. इंडिस्पेंसिबल मतलब आपके बिना काम ही नहीं चले, यू नो, लाइक यू शुड बिकम सो इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन वेर यू वर्क, that and then you can take a better offer. Of course you have to grow and expand, there is no doubt about it, and there is no mistake in that. But very important that you know, like, make yourself indispensable here. Don't leave because you don't like your boss, you're not getting along with the colleagues, because the distance is too much. No, I mean, change that, change all of that, polish yourself to that extent, become the best version of you here in this job,
एंड वंस यू हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल, बहुत अच्छे से प्यार से नोटिस देके आप जॉब नंबर 2 में जाओ, ठीक है? ये तरीके होते हैं. Otherwise, I see so much of youth, like just jumping jobs. 5 months, gone there. 3rd month, gone there. मतलब level of forbearance and endurance इतना कम होता है, और मिस्टेक कभी भी बाहर नहीं होती है. अगर बाहर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है अपने जॉब के एनवायरनमेंट में, आप अंदर जाके रिफ्लेक्ट करो, अपने आप से पूछो that where am I going wrong and what is it that I need to change, and you will come to know. Maybe आप short tempered हो, ठीक है? Maybe आपकी लोगों से बहुत इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे नहीं है. मे बी आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स इनकलकेट करने की जरूरत है, ठीक है? जब तक वो नहीं करोगे ना, तब तक टिकोगे नहीं जॉब में. एंड इट इज रियली नॉट अबाउट द मनी. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के आप 10 गुना पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है? आई हैव डन इट. Same organization, this is my 11th year. My previous organization also I worked for like 11 years. So it is not that you have to, to get a lot of money in your life, you have to keep hopping the jobs. Okay? That means, agar hopping the jobs ho raha hai, means reflect on your inner self. There's something, if somebody's behavior outside was not good, maybe your boss's behavior, that means there was in your mind, you were at crossroads. So that's why in your outer reality, you are at crossroads. Okay? तो अपने लार्जर मीनिंग जो है, कुछ रीजन, मतलब जो भी चीज है, अपनी टेंडेंसीज को चेंज करो. कोई टेंडेंसी है जो आपको जिंदगी में बेहतर नहीं बनने दे रही है, ठीक है? एज आई मेंशन, हो सकता है कि वो मेंटली दूसरों को बारे में बुरा सोचने की टेंडेंसी, बहुत ज्यादा गुस्सा होने की टेंडेंसी, लोगों को एम्ब्रेस और अकोमोडेट नहीं करने की टेंडेंसी, ठीक है? नॉट एक्सेप्टिंग पीपल जस्ट द वे दे आर, वो टेंडेंसी, ठीक है? हैविंग अ वेरी इन्फ्लेटेड ईगो, इतना कि आप वेट करते हो कि दूसरा आपसे बात करे फिर आप बात करोगे, वो वाली टेंडेंसी, ठीक है? सो इस तरह अलग अलग टेंडेंसीज हमारी होती है, और इसके कारण प्रॉब्लम होती है, और हमें लगता है कि मतलब, एंड ऑफ कोर्स दैट वी डू मिस्टेक. तो इसमें लिखा हुआ है मिस्टेक करने का मतलब ही यही है दैट आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है. दूसरों को आप नहीं बदल सकते, दूसरे आपके मिरर का रिफ्लेक्शन है आपकी जिंदगी के, ठीक है? तो इसलिए नॉर्मली हम यही करते हैं ना, कभी भी कोई मिस्टेक होती है, कुछ होता है, तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पर्सन कि उसने ऐसे किया था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसका बिहेवियर ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, लाइक ऐसा कर दिया था मेरे लिए, तो दिस वाज सो, मेरा प्रोजेक्ट था, उसने ले लिया, उसने जाके उसको ऐसे बोल दिया, उसने मेरी बुराई कर दी, ठीक है? अगर कोई आपके बच्चे किसी और से कर रहा है, आपने बहुत किया ये, ठीक है? इसीलिए अब इस सिचुएशन में आप लैंड अप हुए हो कि आपकी कोई और कर रहा है. But then doesn't matter, that's called human being. तो इसमें लिखा हुआ है ना, so that this is the most beautiful thing about mistakes. के लिए लिखा हुआ है mistake is the most beautiful thing about being human. Okay, so mistake इतनी अच्छी होती है, mistake बुरी कैसे हो सकती है? It is the most beautiful thing about being human. So क्योंकि मेरा लैपटॉप नहीं है, तो मैं अपने नोट्स बना रही थी साथ साथ जो की पॉइंट्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट ये वाला. दूसरा पॉइंट मैंने जो बनाया है, which is own your mistake and don't blame others. ठीक है? आज से हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे हमारी डोमेस्टिक हेल्पर अच्छा काम नहीं करती है, कभी भी नहीं बोलेंगे कि मतलब कोई भी चीज किसी और को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से वैसा हो गया, ठीक है? तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमको क्या बदलने की जरूरत है, और गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है. यूनिवर्स आपसे मिस्टेक करा के बातें करता है. Universal forces talk to us when we make the mistakes, okay, by telling us that don't do this, learn from it. If you don't learn from it, the same mistake will keep repeating, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा. अगर हम सीखेंगे नहीं ना इस बार, जैसे हमने सपोज किसी को गुस्सा कर दिया, और हमको बहुत गुस्सा आता है, और जब हमें गुस्सा आता है हमारा दिमाग नहीं कंट्रोल कर पाते, है ना? अभी भी गुस्सा आता है, इतने महीने ग्रैटिट्यूड में रह के भी. तो अब गुस्सा आया, and now you uttered something that was very undesirable and unwanted to whosoever, ठीक है? Maybe to your parents, maybe to your colleague, maybe to your friend, maybe to your cousin, maybe to a relative. तो अब आपने गुस्से में ऐसा बोल दिया, ठीक है? So इसमें अपने आप को अब बिरेट करने की, अपने आप को बीट अप करने की कोई जरूरत नहीं है. We just have to sit and write 10 blessings and learn from that. Learn that वो जो एनर्जी एंगर की है,
उसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत गड़बड़ हो रही है। अगर आपके पास पैसा आएगा भी तो वो चला जाएगा, बिकॉज यू आर अ वेरी एंग्री पर्सन. सो यू नीड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी. व्हाई आर वी एंग्री? बिकॉज हमें लगता है वी आर सुपीरियर एंड वी आर ब्लेमिंग. एंगर मीन्स यू आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन, ऑब्वियसली, है ना. एंगर मीन्स यू आर ब्लेमिंग द अदर पर्सन और यू ब्लेमिंग योरसेल्फ. अपने आप पे गुस्सा, दूसरों पे गुस्सा. बट उस गुस्से के चक्कर में आपका बहुत सारा चला जाता है, 100 चेन की तरह जिंदगी से. रिश्ते जाते रहेंगे, बहुत सारी चीजें जाते रहेंगी, ठीक है. घर वाले तो बेचारे रहेंगे, उनका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, है ना. पीपल हु आर योर रिलेटिव्स, दे विल नॉट लाइक इट. उनको बहुत बुरा लगेगा, उनकी भी सेहत खराब होगी आपकी वजह से, लेकिन उनको रहना पड़ेगा. पेरेंट्स है, बच्चे का गुस्सा आता है तो पेरेंट्स को साथ रहना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, ठीक है. अगर हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, वाइफ को रहना ही पड़ेगा, है ना. कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, उसके बच्चों को भी रहना ही पड़ेगा साथ में, इतना गुस्सा देख देख के. बट द गुस्सा वाला पर्सन नीड्स टू रियलाइज दिस, that I'm destroying my and everybody's life because of my trait of anger. Okay, and he has to see that how he can learn. So अगर आपने किसी को बोल भी दिया, फट से आप उसमें से what is it that you have learned from this mistake? You have to immediately ask yourself that question. Okay, that what is it that I have, you know, that I have, what it is that I need to change, and what have I learned from this? So we have to ask ourselves this and change it. Otherwise धीरे धीरे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, पैसा चला जाएगा. कहते हैं ना, एक बुद्धिज्म में एक कोट है जो गोशो में लिखा होता है, द हेवन ऑल्सो डज नॉट प्रोटेक्ट द पर्सन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड. ओके, सो जो यूनिवर्स की प्रोटेक्टिव पावर्स हैं जो इतना ज्यादा वर्क करती हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, तो वो हेवन डज नॉट प्रोटेक्ट द पर्सन हु इज शॉर्ट टेम्पर्ड. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. और बिल्कुल बुद्धि खराब हो जाती है गुस्सा करने की वजह से. तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल. इसमें रोंडा बर्न ने एक एग्जांपल दिया हुआ है विच इज ऑफ द कॉप्स. बिकॉज बाहर के कंट्रीज में, यूएस में, कनाडा में, अगर आपका एंड ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे रहती हैं, जहाँ की नेटिव हैं रोंडा बर्न, तो वहां पे ये है दैट बहुत बड़ी चीज होती है कि आपका चालान कट गया. एंड तो वहां के लिए उस पर्सन ने, अब उसका बार बार चालान कटता रहेगा बिकॉज मे बी उसको ओवर स्पीडिंग की आदत है, ठीक है. अब वो इतनी ओवर स्पीडिंग की आदत है कि वो चालान एक बार हो गया तो फिर वो कॉन्फिस्केट हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब. बट इस पर्सन ने उस मिस्टेक को ओन किया, क्योंकि जो ट्रैफिक कॉप्स थे वो छुप के खड़े हुए थे बुशेस के पीछे, ठीक है. तो इसको बहुत पहले तो ऑब्वियसली लगेगा ही कि पता नहीं कहाँ पे खड़े, है ना, मुंह से कुछ कुछ निकल जाता है हमारे कॉप्स के लिए. तो उसका भी यही था, बट उसने 10 ब्लेसिंग्स निकाली उसमें से, उसमें पूरी 10 ब्लेसिंग्स निकाली. उसमें इसने बोला कि पुलिस मेरी सेफ्टी चाहती है, तभी तो मेरी इस टेंडेंसी को चेंज करना चाहती है. उनकी वजह से अब मैं ध्यान रखूंगा और मैं बहुत सेफ ड्राइविंग करूंगा, तो अपनी जान भी मेरी, मतलब लाइक आई हैव टू प्रोटेक्ट माय लाइफ. देन उसने ये कहा कि my family waits for me, there's so many people who love me in my life, so when if I'm not driving safe and I'm putting my life at risk, what about, at least I'll be able to return safe to my family. तो इस तरह के उसने बहुत सारे निकाले कि कॉप्स हमेशा इतना हार्ड वर्क करते हैं, लाइक हमारी सेफ्टी के लिए वर्क करते हैं. सो लाइक दिस उन्होंने 10 blessings निकाला, 10 things he could be grateful for in that the driving ticket or the speeding ticket that it was cut for him. So he did not blame the cops. He could have कि ऐसे ही करते हैं, चालान काट देते हैं, ये करते हैं, छुप के खड़े रहते हैं, ऐसी चीजें भी मुंह से निकलती है, हमेशा ऐसा होता है. The moment something goes wrong in our life, we immediately start blaming someone else outside of us. Okay, it is a very normal, natural tendency of a human being, जिसके कारण the situation spirals down further. ठीक है, आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो और उसके बाद सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है. हो सकता है you'll be behind the bars because of that mistake that you've done. Okay, so there are multiple things. So today, whatever it is जो हमने गलती की है, जिसके कारण हमने नेगेटिव बोला है, जिसके कारण हम गिल्ट में है, maybe you've stolen something from someone. Okay, maybe you've stolen something, but it's all right, no? Sometimes in the least happy moments of our lives, we do things which are not appropriate. Okay, so it is just all right. It is all right to make mistake.
Rhonda Byrne has said that it is a blessing, like mistake is a blessing as a human. It is a gift that we have because it is a quick and a short way of polishing ourselves. ओके तो हमने लेकिन सीखा ना. सपोज हमसे गलती से जाने अनजाने में चोरी हो गई, चुरा ली, मे बी वी वांटेड समथिंग वी डिडंट हैव, व्हाटएवर, इट इज ऑल राइट नाउ. ओके सो एटलीस्ट यू डोंट वांट टू गो एंड गिव दैट थिंग बैक टू दैट पर्सन, बट उसके लिए खूब ब्लेसिंग्स लिखो कि आपके अंदर से वो जो कांटा छुपा हुआ है जिसके कारण लाइफ लॉन्ग दर्द होता रहेगा ऑन एंड ऑफ. ठीक है, लाइफ लॉन्ग दर्द होता रहेगा. जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, वो इसका मतलब है वो कांटा फिर से हिलेगा आपके स्किन के अंदर और फिर से आपको पेन होगी. इसीलिए वो कांटा बाहर ही निकाल दो आज. ठीक है, लिखो 10 मिस्टेक्स और कि आपने क्या सीखा एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दिस मिस्टेक दैट यू हैव डन, दैट नाउ आप बहुत इंटेग्रिटी के साथ रहोगे. आपने रियलाइज किया दैट आई शुड नॉट हैव डन दैट, आई शुड नॉट हैव स्टोलन, एंड देन यू कुड हैव. तब आपको पता नहीं था ना कि भी महंगी चीज है तो क्रिएट करनी चाहिए, है ना. और क्या आप एक और चीज धीरे धीरे कर सकते हो, अगर स्टोलन वाली इशू है किसी की जिंदगी में, तो धीरे धीरे करके किसी अंडर प्रिविलेज को आप जितने का भी अमाउंट आपको लगता था कि वो है, धीरे धीरे, अगर आपके पास आज की तारीख में बहुत सारा पैसा है तो जितनी वर्थ थी उस चीज की वो जाके आप किसी को दान कर दो, उतना ही पैसा. ठीक है, एकदम से आपकी लाइफ से वो कर्मा कट जाएगा. या फिर अगर उतना पैसा नहीं है, कोई एक्सपेंसिव चीज थी, धीरे धीरे करके आप एवरी मंथ कोई अमाउंट बांध लो और जाके किसी अंडर प्रिविलेज को दे दो. So this way also you will be able to unburden yourself and lift your spirits high, and then finally that situation will go out of your life. Okay, so today practice is this only. We have to write 10 blessings for that one mistake we may have done, and it says the only way we can that erase or take that thorn out of that mistake is by gratitude. थैंक यू बोलना, थैंक यू बोल के सीखना. ठीक है, और सीखते रहो लगातार, बहुत बहुत जरूरी है ये वाली चीज. ठीक है, और ये प्रैक्टिस इसीलिए इतनी एंड में आई है, ये ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लास्ट चैप्टर है, बस उसके बाद मेरा वर्क है और फिर लास्ट चैप्टर तो वो है कि अब कैसे जीना है. तो ये चैप्टर इसीलिए अभी आया है बिकॉज बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को ओन करना, क्योंकि हम बहुत आराम से ब्लेम करते हैं किसी को. मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ बिकॉज वो ऐसे है, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन. नो, वी डोंट हैव टू. The cause and solution of every mistake lies within us. Okay, we are the reason. Now we will be the solution also. Okay, so everything is about our life. There is nothing called outside world. Outside world is your reflection. Okay, polish your mirror, change your lens if you need to. The way you're viewing the world, okay, that's defective. There is no defect outside. Everything outside is perfect. So that is what this chapter is all about. और ये मिस्टेक करने से, मिस्टेक से सीखने से, रोंडा बर्न ने एंड में लिखा है, what else guarantees dividends like that? So dividends is जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और उसका जो प्रॉफिट आता है, सपोज आपका स्टॉक बहुत महंगा बिका और आपको बहुत प्रॉफिट हुआ उससे, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड्स, है ना. सो ये बहुत डिविडेंड्स हमको इसकी वजह से मिलेंगे एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. ओके, then magically transform mistakes into blessings. आज की practice सुबह सुबह was count your blessings which we may have done, and हमको 10 blessings लिखनी है, रीड करना है और हर एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. In case there's anybody new, the language is I'm so happy and grateful that I have a beautiful house where I live with my family with a lot of comfort and luxuries. Then you go to number 2, that, like I'm so happy and grateful that we have a very clean water supply system in the house that keeps us so healthy, and we can even wash our utensils with that and do many other things and cleaning ourselves and outside. फिर इस तरह से number 3. So 10 things that you have in your life, वो आपको लिखनी है. मे बी अगर आपकी कोई स्किल है, बहुत अच्छी ओरेटर स्किल्स है, आपकी बहुत अच्छी आवाज है, आप बहुत अच्छे पेंटर हो, आपको लोगों से बहुत अच्छे से बन के रहना आता है, लाइक यू एम्ब्रेस एवरीवन जस्ट द वे यू आर.
So anything that you have in your life and outside your life is what you need to write and count your blessings. ठीक है? फिर उसके बाद नंबर 2 पे है choose one mistake that you made in your life. ठीक है? जो आपको अभी भी गिल्ट दे रही है, आप अभी भी आपके मन में है, मतलब हर बार choose that one mistake जो आपने की है. Find a total of 10 blessings you're grateful for. उसमें से 10 blessings निकालनी है. The way I had given examples there, और रॉन्डा ने तो बहुत अच्छे से बताया है ना, स्पीडिंग टिकट के बारे में. सो इस तरह से, और उसमें से हमको पूछना है that what did I learn from my mistake and what are the good things जो उसमें से निकली, जिसके कारण you are so much of a better person now. ठीक है? और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस. So we are waking up in the alpha state of mind and we are sleeping in the alpha state of mind. दोनों टाइम हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं. तो ये मॉर्निंग और नाइट में जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, RAS. ठीक है? वो फिल्टर कर करके चीजें अपनी तरफ खींच लेता है, सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है. सो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जब हम फोकस करके कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में कोई चीज सोचते हैं तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है. फालतू की चीजें नहीं करता, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं उनको नहीं करता, बट डीप ग्रैटिट्यूड अगर आप अगर लाइक 1 मिनट भी दे रहे हो इसको, तो वो दैट गेट्स एब्सॉर्ब्ड इन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. और उसके एंड नाउ यू हैव सोन अ सीड. Okay, so keep sowing seeds of happiness, solution, growth, prosperity, excellent health. These seeds you need to keep sowing. Okay, so once we've sown it, now they will multiply. Okay, they will propagate and very soon आप उसको अपनी outward reality में देखोगे. इसीलिए हम सुबह का टाइम और रात के टाइम को वेस्ट नहीं करते. हम फोकस होके अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेटेड रखते हैं और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड वे में हम ग्रैटिट्यूड डालते हैं. सुबह भी हम 10 लिखते हैं, रात को तो आप कितना भी सोच सकते हो, बहुत सारी चीजें पूरे दिन भर में होती हैं. सो व्हेन यू वेक अप इन ग्रैटिट्यूड एंड स्लीप इन ग्रैटिट्यूड, 70% of your life is sorted and you've already done it. The rest 30% during the day you can actually keep on, like kind of be in gratitude, find things, do your practices and all of that. Okay? So yeah, we are done with this chapter and thank you so much. We go to the other book, which is Creative Visualization, name of the book, and the author is Shakti Gawain, who has done a lot of meditative practices, research, had the best mentors in life, stayed away, away from home for a while, and then उन्होंने ये किताब लिखी है जो बहुत यूजफुल है. और आज के टॉपिक का नाम है मीटिंग योर गाइड. So let's see who is our guide. So we have to meet. I guide me as deeply. I'll be meeting my guide. You will be meeting your guide. It is like that. Okay, guide मतलब हमारे अंदर का internal guidance system. So in Abraham Hicks books, they write that it is, we all have our internal GPS. So that is the word. So we know what is a GPS, right? जो हमको guide करता है through the way and makes us reach our destination. तो जैसे GPS में हम करते हैं ना, तो हम destination को assign करते हैं. अगर हमको, if I have to go from here and I have to go to a cafe, maybe in Gurgaon, so there'll be a distance of these 30-35 kilometers that I have to scale. So there are so many roads. There are arterial roads, there are broad roads, there are the main roads, there are blocked roads. Okay, but GPS मुझे exactly उस road पे लेके जाएगा जो सबसे कम congested है. उसमें आ जाता है ना, it detours you. GPS will detour you अगर कोई बहुत congested road है या blocked road है ना. So you follow your GPS system so that आप सबसे आसानी से you reach that destination जहाँ पे आपको जाना है after having scaled that 35 kilometers. Maybe you didn't know. When I start from the house, I would not know that वहाँ पे there is a blockage in the road और वहाँ पे construction चल रही है. उस road पे बहुत heavier than usual traffic है. हमको नहीं पता होता that वहाँ पे बहुत सारा पानी accumulated है and that road is not working because of it. But the GPS system will take us to the shortest route and the quickest route, and it will also tell us that वहाँ पे बहुत सारा traffic है. Would you still want to go or should I opt another route? ये भी पूछता है ना.
because गाड़ी के स्क्रीन पे वो लगातार आता रहता है, that should be reroute or have another route. उसी तरीके से लाइफ के जर्नी में, in the journey of life, we have an internal GPS system that takes us. So destination हम decide करेंगे. Destination आपकी कुछ भी हो सकती है, maybe to buy a 4-bedroom house in Gurgaon or in Calcutta, in Mumbai, by the beach. That is what is your destination. तो जैसे हम destination GPS में डालते हैं, तो हमने destination डाल दी, ठीक है. अब आपके guidance system का है, guidance system हमारे अंदर है. So that is for small things, for big things, for our goals, for little things that you want to write an article today for a magazine. उसके लिए you want to go shopping today and you want to pick up the right thing because you don't have a lot of time in your hand. Okay, उसके लिए तो हर चीज के लिए हमारा इंटरनल गाइडेंस सिस्टम होता है, इंटरनल जीपीएस होता है, प्रोवाइडेड हम बाहर की नॉइज और लोगों से नहीं पूछ के हम अपने आप से पूछे कि क्या ये सही है, कौन से रास्ते पे मुझे जाना है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे प्लीज गाइड करो, मेरी चीज खो गई है, प्लीज मुझे रिवील करो कि वो कहाँ पर है, ये हो गया है, मुझे ये इतना इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, प्लीज रिवील टू मी दैट किस तरह से होगा, please, this is my problem, I am looking for the right doctor, to the internal guidance system, can you reveal to me who is the right doctor for me right now. Okay, so this is how it actually works. So every solution and the answer to every question in your life आपकी जिंदगी के अंदर होता है. ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं. मीतू आप पढ़ो. Meeting your guide. All of us have tremendous wisdom and knowledge right within us. It is available to us through the intuitive mind, which is our connection with the universal intelligence. However, we often find it difficult to connect with a higher wisdom. One of the best ways to do is by meeting and getting to know our inner guide. The inner guide is known by many different names, such as your counselor, spirit, guide, imaginary friend, or master. It is a higher part of yourself which can come to you in many different forms, but usually comes in the form of a person or being whom you can talk to and relate to as a wise and loving friend. Here is an exercise to help you meet your spirit guide. If you wish, you can have a friend read this to you while you do the meditation. Otherwise, read through it first. Close your eyes and do it. Close your eyes and relax deeply. Go to your inner sanctuary and spend a few minutes there, relaxing, getting oriented. Now, imagine that within your sanctuary, you are standing on a path that stretches off into the distance. You start to walk up the path, and as you do, you see in the distance a form coming towards you, radiating a clear, bright light. As this form approaches, you begin to see whether the form is a man or a woman, or perhaps an animal. If it is a person, how old are they and how are they dressed? The closer the form gets, the more details you can see of the face and appearance. Greet this being and ask what is or her name is. Take whatever name comes to you first and don't worry about it. Now show your guide around your sanctuary and explore it together. Your guide may point out some things that you are never seen there before, or you may enjoy just being in each other's presence. Ask your guide if there's anything he or she would like to say to you, or any advice he or she would like to give you at the moment. If you wish, you can ask some specific question. You may get immediate answers, but if not, don't be discouraged. The answers will come to you in some form later. When the experience of being together feels complete for now, thank your guide and express your appreciation and ask him or her
to come to meet you in your sanctuary again. Open your eyes and return to the outside world. People have one second, I'll just we'll take a pause here. तो इसमें ये जो पैराग्राफ है ये दिस इज अबाउट द मेडिटेशन, दिस इज अबाउट दैट हमारे अंदर के गाइड को हमको ढूंढना है. हो सकता है आपसे इमिडिएटली ना हो, अभी मे बी आप सिर्फ ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट वाला मेडिटेशन कर सकते हो. इवन दैट वर्क्स रियली वेल. ओके, उसमें भी कोई कमी नहीं होती है. लेकिन ये वाला जो मेडिटेशन है इसके लिए दिमाग को बहुत शांत होना पड़ेगा और आपको सरेंडर करना आना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ब्रेन एंड एनालिटिकल माइंड टू मच, बिकॉज दैट रियली डज मेक अ डिफरेंस. सो योर इन दिस यू मतलब बिल्कुल वैसे क्लोज योर आईज, रिलैक्स, ब्रीदिंग आउट और जो बैकवर्ड काउंटिंग है ये मेडिटेशन के तरीके होते हैं. ठीक है, ये स्टेज कांस्टेंट हर मेडिटेशन में. सो जब आप मेडिटेट करते हो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, थोड़ा चिन अप होते ही स्पाइन स्ट्रेट हो जाती है. ठीक है, और सुखासन में बैठ सकते हो और इवन इफ यू सिटिंग ऑन अ चेयर योर बैक हैज टू रेस्ट वेल ऑन योर बैक एंड इट हैज टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट. ठीक है, देन क्लोज योर आईज, थोड़ी देर सिर्फ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है, लंबी गहरी सांसें अंदर और छोड़ना है. ठीक है, उसके बाद आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. 10 to 1 कर सकते हो. दिमाग बहुत बेचैन है, अगर अंदर से घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है तो 25 to 1 कर लो. ठीक है, बट बैकवर्ड काउंटिंग की वजह से फोकस एक जगह पे जाएगा जिसके कारण योर हार्ट बीट एंड योर सारे वो जो स्ट्रेस एंड टेंशन जो मसल्स और नर्व्स में होती है वो सारी चली जाती है बैकवर्ड काउंटिंग से. उसके बाद हमको जैसे एक लाइट देखनी है जो हेड टू टो एंड नीचे से ऊपर तक जाके कवर्स योर एंटायर बॉडी. दैट मीन्स अब आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो. तो ये प्री रिक्विजिट्स रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होंगे. और उसके बाद अब हमको जो इसमें जैसे बताया है दैट आपको अपने इनर बीइंग से, बिकॉज आप बिल्कुल ही लॉस्ट रहोगे इसमें, तो आप इनर बीइंग से पूछो अपने दैट प्लीज रिवील टू मी माय गाइड. ठीक है, so that will come in the form of a person or something, like as female, male, and it is not very difficult because we were we had to do this practice जब हम नित्य शांति के साथ थे. नित्य शांति को आप गूगल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया मेंटोर है वो. ठीक है, तो ये वाला किया था तो उसमें एकदम से रिवील हो गया था कि किस तरह का पर्सन है. और आपको ये भी देखना है कि कोई वो पर्सन है, वो कोई पेट भी हो सकता है, आपको कोई बहुत क्यूट सा एनिमल, कभी कैट नजर आती है, कभी ह्यूमन नजर आएंगे, कभी कोई और नजर आएगा, कभी बहुत ही बुजुर्ग से इंसान जिनको चला भी नहीं जा रहा है, जिनके कंधे झुके हुए हैं, कभी वैसे भी नजर आते हैं. ठीक है, और वो आपको मतलब आपको गाइड करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हो. वो आपको दिखाएंगे कि मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या नजारे पहाड़ हैं, वो आपको आपकी जो सैंक्चुरी है, जो हमने कल पढ़ा था ना कि हम सबकी एक सैंक्चुरी होती है. सो मे बी मेडो आपका सेंचुरी है, ओपन वास्ट ग्रास लैंड वो आपका सेंचुरी हो सकता है कि पहाड़ पे कोई जगह ऐसी हो वो आपकी सेंचुरी हो सकता है कोई अच्छा सा सनसेट पॉइंट हो हिल्स में, वो आपकी सैंक्चुरी हो सकता है कि मेरी सैंक्चुरी तो हमेशा बाय द बीच हो, मतलब द बीच होगा, मतलब बाय द सी, बाय द ओशन. सो उस तरह से देन वो मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि देखो देखो वो दूर एक बटरफ्लाई कितनी सुंदर लग रही है. फिर वो मुझे दिखाएगा कि बहुत दूर देखो एक शिप खड़ी हुई है. सो इस तरह से वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जहाँ पे आपकी नजरें नहीं गई और वो बहुत छोटी छोटी चीजें थी. ठीक है, और उससे आप कोई भी क्वेश्चन अपनी जिंदगी के बारे में पूछ सकते हो. दैट प्लीज रिवील टू मी दैट शुड आई डू दिस. अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है आपकी जिंदगी में, जैसे आपको ब्लड शुगर है या आपको थायराइड है या आपको कुछ एल्जाइमर्स जैसी कोई स्टार्ट हो रही है या कुछ और है, या आपके बहुत पैरों में दर्द रहता है, या आपका वजन बहुत ज्यादा है और बहुत आराम से नहीं कम हो पा रहा है. ठीक है, तो उस तरह आपको उससे पूछ सकते हो जो आपका इंटरनल गाइड है दैट व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू टू गेट दिस. ये नहीं कि वहां पे भी प्रॉब्लम्स का बखान करना शुरू कर दो, मेरी लाइफ में ये है, पहले ऐसा था, पहले वो सा था. नहीं, ऑब्वियसली वो था तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो. अगर वो इतना 20 साल की सफरिंग नहीं होती, अगर आपका बहुत आराम से वेट लॉस हो जाता, तो आप क्यों पूछते ये वाला क्वेश्चन. या अगर आपको बहुत टाइम से डायबिटीज है, शुगर ऐसी हो गई वैसी हो गई, वो सब वो वैसे भी किसी से क्वेश्चन पूछने में इतनी डिटेलिंग नहीं है, इतने डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए. मैंने कल भी ये वाला एग्जांपल दिया था कि क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है, पूरी रामायण नहीं बतानी होती है. ऑब्वियसली अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि
मुझे अपनी ब्लड शुगर कम करनी है क्योंकि 20 साल से मुझे करनी ही है, बस इतना ही काफी है ना, मैं समझ जाऊंगी कि मुझे कैसे करनी है, मेरा तो काम है लोगों की बीमारियां ठीक करना, है ना, दैट्स माय लिविंग। सो अब इतना ही बोला ना, मुझे पता है क्या करना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो मैं पूछूंगी, तो आपका इंटरनल गाइड आपसे पूछेगा, अगर कुछ पूछना होगा आप उसका जवाब दोगे, तो वो बहुत अच्छी सी कॉन्वर्जेशन होती है। लेकिन उस लेवल ऑफ कॉन्वर्जेशन में आई थिंक वी आर प्रीटी मच, अगर हमने ये वाली किताब जो मैजिक बुक है, इसमें हमने बहुत विजुअलाइजेशन किया है ना, हार्ट मैजिक प्रैक्टिस, वो वाली, अगर हार्ट मैजिक प्रैक्टिस आपने की हुई है 3-4 बार, उसके बाद आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड टू डू दिस काइंड ऑफ अ मेडिटेशन ऑल्सो। सो अपना इनर गाइड जो भी, आप उसे बातें करो बहुत अच्छे से, और दैट बिकम्स लाइक योर फ्रेंड। और बार बार आप मेडिटेशन में उनसे बात कर मतलब पूछ सकते हो अपनी इश्यूज के बारे में, अपनी खुशियां भी, अपने वो भी। सही पाथ आपको पूछना है कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मुझे कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, या मुझे उस कंट्री में रेलोकेट होना है, क्या वो मेरे लिए अच्छा है नहीं है, और वहां जाके you can tell that to the infinite intelligence and the bounded wisdom, please reveal to me that मैं वहां पे जाके what should be my next step, या मैं किस रास्ते पे चलूं, या मुझे कौन सा वाला should I take a job or should I do my business। तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है जो हम एक दूसरे से पूछते हैं, तो हम बहुत ह्यूमन बीइंग की तरह ही बता पाएंगे ना। अब मेरी जिंदगी के बारे में आप कैसे मुझे गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है, वो मेरी जिंदगी है ना, मेरे सर्कमस्टांसेस है, मेरे में भी कुछ सेट कर्मास भी थे मेरे पीछे, मे बी मेरे सबकॉन्शियस में कुछ है बहुत हेविली इनग्रेन्ड है जिसको मुझे हटाने की जरूरत है। तो वो सारी चीजें तो मेरा इनर बीइंग मुझे गाइड करेगा, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो मेरे हित में गाइडेंस है ना। जैसे आप मुझे पूछोगे कि मेरे ये 2 जॉब्स है, मैं ये करूँ कि ये करूँ, अब मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना, पता नहीं। अगर मैंने, हो सकता है कि बी वाला कर लो क्योंकि मुझे आउटवर्डली बड़ा फैंसी सा अच्छा सा दिख रहा है, देखिए मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है, वाह बहुत अच्छा ऑफिस है, कितना अच्छा, लाइक इसका नाम भी बहुत है, ये है, बट क्या पता कि आपकी ग्रोथ ए जॉब में हो, है ना। सो आस्किंग अ ह्यूमन एंड आस्किंग योरसेल्फ, योर इनर बीइंग नोज योर डेस्टिनेशन, सो इट विल बी गिविंग यू अ वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। Okay. Yeah, there are some times, like even to find a good doctor, suppose you want to show, it is absolutely okay to take a medical treatment or something. So, आप inner being से पूछो that please reveal to me, the doctor where I should go. And you will see that very soon, you go to that person, bang on medicine, bang on treatment, and बीमारी done. मतलब बीमारी चली जाती है, क्योंकि आपने internal guidance system से ये वाली चीज पूछी है। ठीक है, तो इसी तरीके से कभी कभी इंटरनल गाइडेंस सिस्टम बहुत, मैंने बताया था आपको कि मुझे इंटरनल गाइडेंस सिस्टम ने टर्की से दुबई भेज दिया था, क्योंकि टर्की में अर्थक्वेक आने वाला था, कहाँ पता था मुझे तब। हमें पता होता है कि जिस दिन मैं वहां होंगी, हमको अंटालिया में होना था उस दिन अकॉर्डिंग टू, और सब कुछ हो गया था, सब कुछ, मतलब बिल्कुल बस पैकिंग बची हुई थी, ठीक है। और दैट बार बार अंदर से आवाज आ रही थी कि गो टू दुबई, गो टू दुबई, गो टू दुबई। तो वहां से कैंसिल करके पूरा रिफंड शिफंड करा के फिर दुबई गए थे, ठीक है। तो इस तरह से इनर गाइडेंस सिस्टम हमेशा, वो पर्सन जो आपको दिखेगा ना अपनी सैंक्चुरी में, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, प्रोवाइडेड आप उसका साथ नहीं छोड़ो, ठीक है। अपना दिमाग कम लगाओ, डोंट यूज योर ब्रेन टू मच, समटाइम्स व्हेन यू कंफ्यूज, व्हेन यू नॉट वेरी क्लियर, व्हेन यू रियली नीड टू, कुछ चीज खो गई आपकी, कोई चीज आपको बड़ी करनी है, सैड लग रहा है अंदर, ठीक है, आप बहुत सैड और लो फील कर रहे हो, उस वक्त मेडिटेट करके ना गाइडेंस सिस्टम से पूछो, तो आपको पता लग जाएगा, खूब अच्छी अच्छी रोशनी लाइट दिखेगी, इसका मतलब है एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। तो मैंने बताया था ना, हैदराबाद एयरपोर्ट वाली बात में बहुत लो फील कर रही थी उस दिन, और फिर मैं एयरपोर्ट से लैंड किया, मैं उसमें कार में बैठी टू गो टू ऑफिस, एंड सडनली मैंने कहा कि आई रियली डोंट नो लाइक हाउ इट्स गोइंग फॉरवर्ड और टेकिंग, और उसमें बड़ी सी होर्डिंग आई दैट यू आर गोइंग टू टच द स्टार्स फ्रॉम द टॉप, और ये आया, फिर इससे सिनोनिम एक और आया, एंड मेरी नजरें वहीं गई, देयर वर सो मेनी बिलबोर्ड्स, मतलब जब हैदराबाद एयरपोर्ट पे आप उतरते तो पूरे पूरे साइड, लेफ्ट साइड पे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स है, और बहुत किलोमीटर्स, लाइक 2-3 किलोमीटर्स तक वो रहते हैं, ठीक है। बट आई डिड नॉट, माय नजर डिड नॉट गो एनीवेयर एल्स, इट वेंट देयर ओनली। सो देयर वाज समथिंग इंटरनल, जब मैं अपने आप से बात कर रही थी, आई वाज टॉकिंग टू माय सेल्फ, ऑब्वियसली आई वाज सिटिंग इन द कार, so I was talking to myself and I was thinking that I don't know what is the way forward and how to go, something had happened in office, something, and then that is the billboard that I saw,
and where my eyes went only on that. No, that means the universe was communicating to me through that billboard. ओके तो वो उनकी आवाज थी, और कैसे आवाज आती है? इनर गाइडेंस तो यही होता है। तो यही है आज का टाइम। क्या हो रहा है? एक्चुअली मैं फोन से कनेक्टेड हूँ, सो मीतू विल बी एबल टू रीड ओनली सो मच टुडे। ट्राई एंड डू दिस मेडिटेशन इफ यू कैन। There just might be failures in getting to the right kind of meditation, which is absolutely okay. मतलब मुझे तो 6-7 महीने लग गए थे to connect to my inner being. Frankly speaking, it was not easy. जबकि मैं बहुत आराम से चिल्ड आउट शांत दिमाग की पर्सन हूँ, मतलब वैसे भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं यूज करती जनरली ऑल्सो। समटाइम्स आई जस्ट गो विद द फ्लो, but still I took 6 months to get to that level of meditative practice where I could talk to a person in my meditation. So it is absolutely all right अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या बहुत ज्यादा परेशान होने की आदत है, ठीक है? सो वो धीरे धीरे, लाइफ एक जर्नी है, ठीक है? लाइफ डेस्टिनेशन नहीं होती है, and fun lies in the journey. Fun is never in the destination because destination never happens. जैसे ही आप डेस्टिनेशन पे जाते हो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है? मतलब जैसे ही आपने अपनी यू नो लाइक मे बी आपने अपनी BMW कार ली जो आपकी जिंदगी भर की गोल था, मतलब योर एम वाज दैट आई रियली वांट दैट टीम, आई रियली वांट दैट कार। जैसे ही आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे, डेस्टिनेशन एक्सपैंड हो जाएगा और अब आपको जैगुआर एसयूवी चाहिए होगा। जैसे ही आप वहां पहुंचोगे आपको रोल्स रॉयस चाहिए होगा, ठीक है? तो इस तरह डेस्टिनेशन कभी नहीं आती है। अगर अभी की डेस्टिनेशन है कि आपको 50 लाख रुपए कमाने हर महीना या हर क्वार्टर, ठीक है? आपका जैसे ही 50 लाख कंफर्टेबल हो जाएगा, आपकी 2 करोड़ हो जाएगी, यू नो। सो डेस्टिनेशन आपकी कभी नहीं आएगी। इसीलिए फन लाइज इन जर्नी। जर्नी में जो फ्रीक्वेंसी आपकी है उसके बेसिस पे ही आप डेस्टिनेशन अचीव कर पाओगे अपना। ये बहुत क्लियर चीज होती है, ठीक है? तो एंजॉय दिस जर्नी। गिरते हो तो कोई बात नहीं, उठ के चलने लग जाओ, ठीक है? बहुत गिरोगे, हम सब गिरते हैं, तभी तो वो होती है ना, जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो खूब थाइज में पेन होती है, हमारे काव्स में पेन होती है, बट उस वक्त हमारी मसल्स बिल्ड हो रही होती है। तो फिर दोबारा चलो, तो मसल्स जब स्ट्रांग हो जाएंगी उसके बाद आप देखना कितनी आराम से आप स्केल कर लोगे माउंटेन को या हिल टॉप को, क्योंकि अब आपकी मसल्स बन गई हैं। तो ये तो चलता रहेगा, है ना? लेकिन इस जर्नी को एंजॉय करो। There will be a sweet pain sometimes, okay, but it is for your good. You are developing that time and the universe is taking to a higher altitude in life, है ना? कहते हैं the night is darkest before the dawn. तो इसीलिए जब लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं तो आप उनसे घबराओ मत, डरो मत। एक बहुत न्यू विस्टास आर ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ, दैट्स व्हाई इट हैज हैपेंड, है ना? एज दे से नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। सो सुबह का डॉन, सुबह की रोशनी जो होती है, उसके पहले की रात सबसे अंधेरी होती है। तो अगर जिंदगी में अंधेरा चल रहा है या जिंदगी में वो मोमेंट्स आ रहे हैं, बार बार डार्कनेस आ रही है, मतलब बार बार ऐसी परेशानियां आ रही हैं दैट यू फील वेरी वेरी यू नो लाइक बॉगल्ड बाय देम और डिफीटेड बाय देम, डोंट बी, okay? Because there's something huge which is coming in front of you, and there'll be a break of dawn, and then life will not be the same again in the best way possible. So that's very very clear, right? So this is how we have to scale a journey of life together. We all have our inner being that will never let you get defeated, है ना? जो लोग डिफीट हो जाते हैं फिर वो हार जाते हैं ना जिंदगी में, हमने देखा है ना। मतलब कई लोग बीमार होते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं अपने ऊपर कि नहीं, अब मैं नहीं ठीक हो सकती, मुझे तो ऐसे ही रहना है जिंदगी भर। बट नो, वी डोंट हैव टू। वो डिफीटिस्ट एटीट्यूड के साथ हम कैसे नई जगहों पे जाएंगे? लाइफ के अलग अलग जो यू नो बहुत सारी, लाइफ वांट्स टू गिव द बेस्ट टू अस। बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ दैट, okay? And that internal guidance system, we call it spirit, we call it angels, we call it whatever. So all that will always be there with us, okay? And you can't even imagine how your life is going to be if we keep following these books, the gratitude, you know, love, this power, meditation, reading, writing, listening to your own voice. When you're talking, you're listening to your own voice, right? So this is how we have to kind of go along. So yeah, इस तरह हम कल चलेंगे। और थैंक यू सो मच। आज का हमारा इतना ही है। अब स्क्रीन पे मुझे वो दिख नहीं रहे हैं बिकॉज ये छोटा फोन का स्क्रीन है मेरा, तो वो सब। बट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आज सेशन के टाइम, सो
थोड़ा सा फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ जब हम ये सेशंस करेंगे, एक एक लाइन को च्यू कर करके पढ़ेंगे ना, तो हमको वहां से बहुत क्यूज मिलेंगे अपनी जिंदगी के लिए. सो वी कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट रीडिंग whenever we do these beautiful books. एक एक लाइन, कभी कभी कहते हैं ना कि शब्दों में दुनिया छुपी होती है, तो पता नहीं कौन सा वो शब्द है जिसमें आपकी दुनिया छुपी है, जिसमें आपकी सक्सेस छुपी है. तो इसीलिए अवॉइड करो कि डिस्ट्रैक्शंस इस तरह के, बिकॉज वैसे तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करती हूँ तो मुझे पता नहीं होता. आज नॉन स्टॉप फोन पे टेक्स्ट आ रहे थे फ्रॉम यू गाइस, so everybody who's there right now. So just be see that वो हो सकता है वो शब्द आपका मिस ना हो जाए जो आपके लिए लिखा हुआ था. So read that chapter again once again. And till Monday, guys, on and off, I may not be available to take sessions. Of course, like कल मैंने थोड़ी लेट की फ्लाइट ली है, तो अगेन जैसे आज स्क्रीन शेयर किया है प्रिया ने एंड पूनम वाज आल्सो रेडी, तो इस तरह हम करेंगे. आई विल बी एट द एयरपोर्ट. मेरे बहुत ट्रांजिट्स है, इसमें I have to take 5-6 flights in the next 1-2, yeah, so I have to take 6 flights in the next 5 days. Okay, which I have taken a little late wala is tarah se that I can be logged in. But one particular, I think Hyderabad, Chennai is very early in the morning, so I may not be there. But 6 to 7, I'm on the grounds, so I will be logged in for sure, except for the security check-in. जब मेरा X-ray machine में सामान जाएगा, बस उस वक्त सेल नहीं होगा साथ में. So of course, बहुत diligently मैं, जैसे आप लोग सब सुनते हो, मैं भी सुनूंगी. सो कल का सेशन आई थिंक मेरा वर्क पूनम बहुत बार ले चुकी है, और मेरा वर्क समहाउ ऐसा होता है दैट आई नेवर मैनेज टू टेक, तो इसलिए कल प्रिया आप मेरा वर्क ले लेना, पूनम आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लेना, ठीक है. सो आई थिंक मेरा वर्क हैज बिकम योर पेटेंट. तो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब सक्सेस चाहिए होती है, देन यू हैव टू डू थिंग्स दैट आर डिफरेंट, है ना. सो एंड आई थिंक यू नीड टू डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टुमारो विद एवरीवन, है ना. And so yeah, that's it. I'll be connected. I'll be at the boarding gate. Flight departure मेरा आराम से है, like 8:30 types है. So what time होगा, I'll listen. If there's any input I have to give, will be there. But to everyone, be there in the session. If we have whatever attendance now, has to stay, okay? And be very diligent with the practice and attending, because we are only answerable to ourselves in this world, not to anyone else. Okay, so we are answerable to ourselves, that whether we woke up in the Brahm Muhurat, we did all the exercises, whatever Poonam, Priya and me had to share, or any of you, has to be there. I might just share something very, very important with all of you, which was Hamilton's theory that I had read a while ago. तो मुझे उसको अच्छे से मैं उसको ड्राफ्ट करके, अगर टाइम मिलता है तो कल मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी. And परसों 100% I'll do the session on Wednesday. So हमारी advance booking Wednesday तक की हो चुकी है रीडिंग की, which is the best thing. I mean, like, this is so beautiful. So yeah, thank you so much. So can we see any hand raise? Can quickly share today being a Yes, work ma'am. day when I've got to run to John, work. Yes, Mr. ma'am. John wants to Sandhya, and Mr. John. Mr. John. Yes, John sir, Can I बताइए. take? Please share. Yes. How's your mom? How's your mom's surgery? She's all right. Today we are admitting her into the hospital morning. 20th is her birthday. They have fixed a date of surgery on 20th. Okay. We 4 brothers and 4 sisters. Yesterday we had a joint call. And we have requested the doctor to do the surgery one day later. They have to decide. Maybe with prayer, my good friends are suggesting without surgery anything is possible. That is good. Good. Please pray for that. That's number one. Number two, I want to make use of today's that presentation. Know that police, because this is the one we are working, accident free India, through a pilot project, accident free Kanyakumari district, our native, and accident free Chennai. We have almost started. So I am going to give this with your name, if I have the permission, to the DGP of the state and the commissioner. We are going to launch very shortly. You will hear about that, because we are losing, I told you, 1,050 people on the roads every day. 1,050. The biggest problem is I'm adding out of 10, 11 is my value. If I'm giving my body like this, it's the lowest 1.5 million. That is today's dollar value, 12.5 crore
to 375 crore, 30 times. You understand? So we are working on, we should inculcate in everybody's mind that my value is lowest is, it's as per International Stanford University, 12.5 crore. So thank you so much. And another one thing I just want to say today, if I am pointing finger on you, 3 fingers are pointing me. That I should think. Please keep it. Thank you. Thank you, Mr. John. Yeah, thank you. And this is so selfless and so Yeah. noble. I mean, so looking forward to it. I really hope that, we can kind of really drastically remove and nullify the deaths. I think for that, we also need to control alcoholism, alcoholic drivings. That I think is the major most life taker on the roads. Night driving and alcohol. So maybe In you fact, can incorporate that as part of your project. no, we are not taken any liquor audit so far. Our task Yeah. we can get 3 crore with the same manpower every year. But our partners are fighting with me, but I never allow. Being a person on the top, I have vetoed them. No, because that is one of the reasons. So, like the rules and regulations in our country can become so strict that if they have any level of alcohol in their blood above a certain level, so like people should not be on the road. They don't have a right because they're not just taking their lives, they're also taking the life of the others, harmless people. So Yes. yeah, I hope the government of India can do something about it. I mean, this is very important, especially the truck drivers and people who are night driving, like even the youth these days, they are all in inebriated condition, when they actually drive in the night, which is also, but yes, you've not taken that into consideration, but you can keep this in mind in your own way. And together we can pray about it, that how that can be controlled. Some method we need to give the government alternate revenues, and the social drinking is the biggest problem now. They don't have control. Once one No, small which is they okay, start. sir. I mean, like drinking is No, not a that is a problem, but if problem. somebody's drinking, they can take a cab, instead of driving themselves and putting their and someone else's life to stake. I think this is what I'm saying. Like, Yeah, I yeah. have no, this is individuals. We respect everyone's decision. If they want to drink and fall down and make a scene, it is totally their call. But, harming their own life and someone else's life because of that condition, they can take a cab or someone else can drive. Their non-drinking friends can drive them back or whichever. Yeah. On highways, people are drunk and they're driving, which is something which is very, very sad because Unfortunate. yeah. So that's also the concern. Yeah. Yeah, thank you so much for doing such noble things, and we feel so proud of knowing you, sir. Thank you so much. Thank Yes, you. Thank you. Sandhya, can you quickly share, because I've got to run to work today. I have a couple of conferences to attend online. Are Sandhya you was still supposed logged to. in? Yeah, Sandhya ने मैम शुरू में करना था ना, maybe उनका actually school she होता है. gets in between while traveling na, she gets lost the connections and all. So अच्छा she was supposed to share in the morning only, but अभी तो नहीं दिख रही है Sandhya. अच्छा Yeah. अच्छा, कोई बात नहीं. हम संध्या से फिर आप प्रिया कल करवा लीजिएगा, ठीक है? Yeah. मेरा Sure, पता sure, नहीं है sure. कल कल. सेशन के बीच में, मतलब 2 बुक्स के बीच में एक बार उसको वो कर- हाँ, बिकॉज हाँ. वो 2-3 बार से ट्राई जी, कर जी। रही है, बट आई थिंक शी Try इज कर रही है. ड्राइविंग और समथिंग. या we'll And do that. one more thing is Sunaina's song is due if you have time today, ma'am, and if she's हाँ, logged ठीक है. in. I'm logged in from the phone only, so yes, Sunaina, please दीप्ति continue. संडे करेंगे दीप्ति, जब आप भी संडे free तो हो. किसी और का स्लॉट होता है. You cannot encroach on हाँ, तो that. मैं सर के साथ आज मैं भी, मेरे को थोड़ा सा अच्छा. संडे करते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, डुएट कर लेना, फोन पे प्रैक्टिस कर लेना. हाँ ठीक है. Yeah, chalo, bye. Thank Have you, a brilliant day, thank you. everyone. Be super productive, super happy, super healthy, and have a day full of fun and laughter. Thank you so Thank much. you. And see you all Thank you, tomorrow. ma'am. Thank you Thank you so much. so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. To everyone.